I thank all of you for taking the time out of your busy schedules and being here with us today. The topic for our panel discussion today is social media and its impact on the youth. And I understand that we're under a time constraint, so let's just start with Mr. Muhammad Waqas, who is the Deputy Director at Digital Forensics FIA. Sir, my first question to you is twofold. What procedural steps is the FIA, which is the designated agency under the PECA Act to investigate cybercrimes, what procedural steps does the FIA have to take when it is in receipt of a complaint? And in particular, what technology does the digital forensics team at FIA employ in the investigation of the offences? Thank you very much. Thank you for having me here. It's really honored. Your first question, if you have any complaint, if you are a victim of cybercrime and you don't have any other option, you straight away go and complain to FIA and report your crime. The first step is you need an application which will address the in charge cybercrime station. It could be Lahore, Faisalabad, Gujranwala. We have 15 police stations all over the world. So the second step is, once you come up with the application, there will be a verification number. Verification process is actually to identify the complainant, legitimacy of a complainant or legitimacy of a complaint. Second step, you will get your verification number. Once it is verified, you will sign, yes, I want to pursue my application, and you come up with the evidences. What sort of evidences you have against which you are complaining someone XYZ. It could be screenshots of a Facebook, screenshots of WhatsApp chats, screenshot of someone is harassing him, bullying him, threatening him. All the screenshot, all the digital footprints, you always keep with yourself. Never delete the evidence. For example, someone is harassing someone and you delete all the chat. Don't do that. Keep those evidence with you. Take the screenshots and report it in a separate. Second step is that an inquiry officer will be appointed on that complaint, and that inquiry officer will actually investigate all the facts, and he will actually go for all the digital footprints you have provided and against which you have condemned that the guy who is actually threatening you or bullying you, harassing you. It's a fair opportunity. Investigation officer will call that person, send a notice to come up. This is the complaint against you. What you have to do in your defense. And we'll take his mobile, his if the nature is severe, we don't call the perpetrator or whatever. At that time, it is not confirmed yet. So what we do, in cognizable offences, section 21, 22, and cyber terrorism, we'll straight away go and raid on the and get collect all the evidences from the crime scene. And in normal defamation cases, you get the mobiles, you do the forensic, and then appropriately move that case to as per the law, as per the feature. The second part, digital forensic. In digital forensic, the basic concept of digital forensic is to actually unearth or collect all the evidences from the digital media. Whether it's your mobile phone, your memory card, your USB, your computer, your server, your online accounts, whatever digitally is available, the objective of forensic is to recover all the footprints from that evidences. And digital forensic vary from case to case. It's a very complex question. It's not some kind of a monotonous routine in which sometimes it's all depend on what type of media you are using, what type of mobile is there, model, level of encryption,
level of operating system. Nowadays, the operating system are getting more secure, more encrypted, which are a bit hard to encrypt, but we got tools through which we can extract all the data related to the scope which was given by the investigation officer. I hope it give the answer. Since we encounter new types of cybercrimes every other day, would you say that the FIA is currently well equipped to deal, the digital forensics team at FIA is well equipped to deal with new challenges that come its way? The answer is yes and the answer is no, both. For example, I have gone with 4 or 5 different trainings with FBI, and I asked the same question to FBI, especially the ransomware, if you have heard about the ransomware. The ransomware is a technique in which the hacker actually encrypt all your data and ask the ransom, if you give me an answer, I will give you a key. There is no solution to decrypt. If someone encrypted, some hacker encrypted your data, there is no way to decrypt it. And I asked the same question to FBI, they don't have any technology. NHS, UK, 5 sheriff offices in counties, America, and some other big organization, their data has been encrypted, but they couldn't unlock it. Again, the question is very complex. In most of the scenarios, yes, we do have the capabilities. But sometimes, if the case is unique and if it's a unique nature of a case where the certain technologies and the operating system and the technology of the, especially the hacker, the technique they use, sometimes there are difficulties. There are limitations even in the science. You can't do it. For example, if I burn my mobile, I will totally burn it. Can you retrieve the data? No. Partially burn? Yes. Sometimes partially. If it is overwritten, yes, sometimes you retrieve the data, sometimes recovery is possible, sometimes it's not. So it's varying from case to case. Anyone from the audience have any questions? None? Of course. Please. और एक्चुअली कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी मैं इस पर तवज्जो डालना चाहूँगा सोशल मीडिया के ऊपर. Being in as an officer in law enforcement agency, social polarization, हमने इसके ऊपर शायद सोचते भी नहीं है ना सोचना चाह रहे हैं. अगर आपको एक रिसर्च टॉपिक दे जाता हूँ, ब्रेक्सिट एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका को ज़रा थोड़ा सा पढ़िएगा. होता क्या है, आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, वो क्या कर रही है. उन्होंने एक ओशन मॉडलिंग के हिसाब से एक आपका प्रोग्राम बनाया. आपका जब हिलरी क्लिंटन, जब वो एक स्कैंडल चला था सारे का सारा, एंड दे चैलेंज्ड इट कि अगर 2 लोग हैं और 2 एक्सट्रीम्स पे हैं, एक एक्सट्रीम मैं कहता हूँ नंबर 10 पे है और एक एक्सट्रीम नंबर 1 पे है और एक शख्स जो नंबर 5 पे मॉडरेट है. उन्होंने कहा वी जस्ट नीड 40 मिनट्स. आप जिस एक्सट्रीम पे से जाना चाहते हैं हम उसकी तरफ इसको मोल्ड कर देते हैं. अब उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया. उन्होंने एक पोस्ट लगाई हिलरी क्लिंटन की. अब वो पोस्ट उस शख्स के पास गुजरी जो ना हिलरी क्लिंटन को पसंद करता था, ना उसे डिसलाइक करता था, ना लाइक करता था. उसने उस पोस्ट के ऊपर लेस देन 1 सेकेंड रुका और उसको आगे कर दिया. They said okay, now give us 40 minutes. उसके बाद उस शख्स का प्रोफाइल निकाला गया. उस शख्स को नफरत थी 2 चीज़ों से, एक रेड कलर से और दूसरा कुत्ते से. What they did, उन्होंने हिलरी क्लिंटन को रेड कलर का कोट पहनाया और कुत्ता से पकड़ाया और वही पोस्ट 40 मिनट के बाद उसके पास दोबारा आया. And he stayed on that post for more than 10 seconds and even he commented on that post. What a pathetic lady.
दैट्स द वे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यंगस्टर्स के लिए। हमारी पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही है, हमें वही चीज़ दिखाई जा रही है जो हम देखना चाहते हैं। We don't know what are the facts। आप अगर रात 11 बजे 12 बजे आप टिकटॉक पे आते हैं, स्नैक वीडियो पे आते हैं, तो होता क्या है, एआई क्या कर रही है, आपका फ्रंट कैमरा आपको रजिस्टर्ड करता है कि एग्जैक्टली 11:30 यू गेम ऑन टिकटॉक, और ऑन सर्टन कंटेंट स्पेस जो आपके सामने शो कराए जाते हैं कि आपने एक सर्टन एड जब वीडियो को देखा है, वही एड्स आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है। आप इसी प्रोफाइलिंग का नतीजा ये होता है कि अगर एआई चाहे तो आपको किसी भी तरफ मोल्ड कर सकती है। और आप मोल्ड क्यों होंगे? बिकॉज योर मोबाइल इज योर बेस्ट फ्रेंड एट दिस मोमेंट। आप मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फेसबुक पे है, टिकटॉक पे है, स्नैक वीडियो पे है, ट्विटर पे है, आप अपना इंस्टाग्राम के ऊपर। दैट्स व्हाट वी डू। वी लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। और अगर किसी को भी मोल्ड करना है, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ सोशल polarization। The second part, if you have a smartphone, forget about your privacy। ये जो हम शोर मचाते रहते हैं फोरम्स में, लगता है प्राइवेसी प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन के अंदर हर वो ऐप है जो आपको ट्रैक कर रही है, हर वो ऐप है जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है। वेरी सिंपल, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। ये तो जेन से निकाल दें कि आपका स्मार्टफोन है। आप इफ़ यू हैव एवर इनकाउंटर्ड कि अगर आप किसी एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो वेरी नेक्स्ट डे आपको फेसबुक के ऊपर वो सजेस्टेड पोस्ट आनी शुरू हो जाती है। अगर अपना मोबाइल खोल के देखें, मैंने एक दफ़ा अपना मोबाइल चेक किया, मेरे कैलकुलेटर को कैमरे की एक्सेस है, मेरे कैलकुलेटर को माइक की एक्सेस है। वाई? कैलकुलेटर का क्या काम है? माइक की एक्सेस और कैमरे की एक्सेस उसको दी हुई है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी अगर हम इस पर ना क्लिक करें इसको तो आप ना क्लिक करें तो आपको देंगे नहीं, आपको ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब हम इधर ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूं और वो कहे कि मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं है, हर बंदे का व्हाट्सएप का अकाउंट है। अब दूसरी चीज़, थोड़ा सा हमें यंगस्टर्स को खास तौर पे, फीमेल्स, social media, there are so many dark sides of this social media। if I say मैं अगर ये कहूँ इस वक्त कि one of the cyber crime is one of the biggest illegal economy in the world at this moment। it's more than $650 billion, which is more than 160 countries GDP। हमें भी पता ही कुछ नहीं है। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, हमें वी हैव नो आइडिया डार्क वेब के ऊपर क्या हो रहा है। आपका डेटा स्टील हो रहा है, आपको तो पता चलता है 5 साल के बाद कि हमारा जनाब फेसबुक का इतना डेटा स्टील है, उसमें आपका ईमेल भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा। डार्क वेब पे क्या हो रहा है, सिल्क रोड पे क्या होता था, क्या दिखता था, क्या है। एंड दिस इज जो हम देख रहे हैं सरफेस वेब, दिस इज ओनली द 4%। 96% इज डीप एंड द डार्क वेब। वो दुनिया में पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है। So the point is, on social media, the darkest side is please do not share your personal pictures, your personal stories। हमारे I don't know, it's in our culture। ये क्या होता है, सर्टन लोगों के साथ की कुछ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हमने जाना है, मैं जा रहा हूँ बिजनेस क्लास में, मेरी सीट होगी एमिरेट्स के अंदर, मैं बाय द टाइम लाउंज से बिजनेस लाउंज में एंटर होऊंगा, वहाँ से तस्वीरें लेता जाऊँगा, और जब अपनी बिजनेस क्लास सीट पे बैठूंगा वो सारा कुछ आई विल पोस्ट इट ऑनलाइन अपना सोशल मीडिया अकाउंट। क्यों? लोगों को पता चले कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड इफ आई आर प्लानिंग समवेयर, और मैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, एंड द परपेट्रेटर, बैड एक्टर्स, it's very easy to get all the information through your file।